नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम करंट व्यूज़ के साथ आपका मेज़बान खालिद खोखर हाज़िर है। काफ़ी अरसे के बाद आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, लेकिन आज जो हम इशू लेके आए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। वो सिंध के कराची का इम्पॉर्टेंट इशू है, पूरे सिंध का इशू है कि ज़मीनों की जो जिस तरह अलाटमेंट हो रही है, और ख़ास तौर पे जो बहरिया टाउन का इशू है कि बहरिया टाउन की लाखों एकड़ ज़मीन, वैसे तो उनको सरकारी सतह पे जो अलाटमेंट हुई है या कुछ उसने ख़रीद की है वो हज़ारों में हो सकता है एकड़ हो, लेकिन जिस तरह जो रिपोर्टिंग हो रही है कि लाखों एकड़ ज़मीन वो जायज़ नाजायज़ जिस तरीके से हासिल हो रही है वो कर रहे हैं। और सिंध के जो बहुत पुराने और कदीमी गाँव हैं, देहात हैं, उनको मिसमार किया जा रहा है, वहाँ की कब्रिस्तानों को मिसमार किया जा रहा है, वहाँ के लोगों को बेदखल किया जा रहा है। सिंध एक्शन कमेटी जिसमें सैयद जलाल महमूद शाह साहब की SUP है, सिंध यूनाइटेड पार्टी, डॉक्टर कादिर मक्सी साहब उसमें शामिल हैं, उनकी सिंध तरक्की पसंद पार्टी है, GSN वहाज़ है, रियाज अली चांडियो साहब उनके सरबराह हैं, सिनान कुरैशी साहब की पार्टी है, GSN कौमी वहाज़, कौमी अवामी तहरीक और भी मुख्तलिफ पार्टियाँ, सिंधी अदबी संगत है, वो सब उसमें शामिल हैं। तो उन्होंने इस जबरी बेदखली के ख़िलाफ़ उन्होंने एक कॉल दी थी कि 6 जून को हम बहरिया टाउन के सामने धरना देंगे। पहले तो मैं एक्शन कमेटी की सरबराहान को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह उन्होंने मेहनत की और इतने बड़े तादाद में लोग जमा किए, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद या तो जो नेशनल पार्टीज़ हैं, जिस तरह PDM है, पीपल्स पार्टी है, नवाज़ लीग है, इस तरह वो तो बड़े बड़े जलसे करती हैं, उनके पास लोग भी बहुत होते हैं, वसाइल भी उनके बहुत सारे हैं, लेकिन इस तरह की पार्टी जो छोटी छोटी पार्टीज़ जिसको हम सिंध लेवल पे जो काम कर रही हैं, तो उनके पास इतने वसाइल भी नहीं होते, और लोगों ये एक तवक्को की जाती है कि इनके कहने पे लोग जमा नहीं होंगे। लेकिन आज आपने देखा कि किस तरह लाखों लोग कराची के रोडों पर बहरिया टाउन के सामने उन्होंने एहतजाज किया और पुरअमन एहतजाज किया। तशद्दुद के वाक़यात नज़र आए हैं, और भी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिस पे बहुत कंट्रोवर्सी है कि जो सिंध एक्शन कमेटी के लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये लोग जो अंदर गए थे वो हमारे लोग नहीं थे, क्योंकि पहली बात जब सुबह फुटेजेस दिखाई गई तो उसमें सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ाम किए गए थे। पहले तो पुलिस की गाड़ियां थी, कंटेनर्स थे, कंटेनर्स के पीछे पुलिस मौजूद थी, उसके पीछे मलक रियाज की जो बहरिया टाउन की सिक्योरिटी है वो भी वहाँ मौजूद थी। तो अचानक किस तरह लोग आए और किस तरह अंदर दाखिल हुए और किस तरह वो आग लगी जिसमें बड़े बड़े टावर्स जो गिर गए हैं, इसका मतलब है कि ये कोई पेट्रोल या आम चीज़ की से आग नहीं लगी। तो वो भी एक सवाल है जो हम अपने दोस्तों से पूछेंगे। तो नाज़रीन आए अब बात करते हैं जो इनका सिंध यूनाइटेड पार्टी का सरबराह सैयद जलाल महमूद शाह, और वो सिंध एक्शन कमेटी का कन्वीनर भी है, तो हम उससे बात करते हैं। जी साईं जलाल शाह साहब, आप क्या समझते हैं आज की सूरत हाल को? आज की सूरत हाल ये थी कि अजीम आलीशान इज्तिमा हुआ, लाखों सिंध के जो लोग थे वो शरीक हुए। हम समझते हैं कि सिंध का ये इज्तिमाई शऊर है कि इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, और इसी वजह से ये बहरिया टाउन वाले और सिंध गवर्नमेंट परेशान हो गई कि अब इनको कैसे रोकना है। तो फिर उन्होंने साजिश करके कुछ शरारती लोगों को खुद उकसाया और ख़ुद किया, मना भी किया, और फिर उधर उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करने के लिए के बजाय हम जो बाहर बैठे हुए हैं गेट के ऊपर उनके ऊपर यानी फायरिंग की या शेलिंग की, तो ये हो गई। तो ये कह सकते हैं, लेकिन हम सलाम करते हैं सिंध के तमाम लोगों को कि जो अपने बड़ी हमारी इतनी तवक्को नहीं थी, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा लाखों लोग शरीक हुए। मेहरबानी साईं जलाल महमूद शाह साहब, आपने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। साईं जलाल शाह साहब का कहना है कि एक तो जो ये वाक़या हुआ है ये उन्होंने खुद करवाया है, क्योंकि हमारा कोई कारकुन उस तरफ गया ही नहीं है, मना कर दिया था, और जो लोग गए थे वो हम उनको बार बार बुला भी रहे थे, लेकिन उसने किसी भी एक्शन कमेटी के किसी भी सरबराह की कॉल पर तवज्जो नहीं दी, उसको नहीं माना, और उन्होंने अपनी कार्रवाई जारी रखी। तो ये हम में से नहीं थे। दूसरा इनका ये था कि कई बेगुनाह कारकुन गिरफ़्तार किए गए हैं जो इसमें नहीं थे, और जो शेलिंग हुई है या जो फायरिंग के वाक़यात हुए हैं जो पुलिस की तरफ से ये बता रहे हैं कि वो भी बेगुनाह कारकुनान के ऊपर हुए जिनका तशद्दुद के वाक़या से कोई ताल्लुक़ नहीं था। हम अभी बात करेंगे सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब हैं, ये भी SUP के वाइस चेयरमैन हैं, तो इनसे पूछते हैं कि जी शाह साहब, आप आज की सूरत हाल को किस तरह नज़र से देखते हैं? जी खालिद खोखर,
آپ کی اس سوال کے ہم نے جو دیکھا ہماری توقع سے بھی بہت زیادہ لاکھوں لوگوں نے جس طرح 14 سال کی زرداری مافیا اور بلڈر مافیا کی 3 اضلاع خصوصاً 3 اضلاع ملیر جامشورو اور ٹھٹا میں جو لاکھوں ایکڑ زمین بلڈر مافیا اور اپنے تصرف میں استعمال کے لیے جو الاٹمنٹس کی گئی ہیں ان پہ غصہ اور ان کو رد کیا گیا اس ریفرنڈم میں. لاکھوں لوگوں نے رد کیا ہے. اگر آپ نے 2-3 سرداروں اور 3 ڈپٹی کمشنرز کے معرفت ان کو لاکھوں ایکڑ الاٹ کیے ہیں تو ہم اس کو سمجھتے ہیں اس کو گرفتار کر کے اور نیب کے آگے ڈالا جائے. ہم سندھ کے عوام کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے اتنی زبردست باوجود سندھ حکومت کی ہر ضلع میں یہ ہدایت تھی کہ لوگ نہ نکلنے چاہیے لیکن اتنی تعداد میں آئے اور پرجوش پورا اپنے 6 گھنٹے ہمارا پورا پروگرام پرجوش رہا. کیمیکلز کے تھرو آگ لگا کے دہشت گردی اور دوسروں کی کیونکہ وہ ڈرتے اس بات سے ہیں کہ لاکھوں لوگ ہمارے جلوسوں میں کیوں نہیں آتے. ہم نے پانی کی پروٹیسٹ کی مختلف پروٹیسٹ کی لوگوں نے ان کو رد کیا لیکن اس ایشو پہ کیوں آئے ہیں جو انہوں نے پورے غبن کیے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی سازش ہے اور ہم کیسوں کے لیے تیار ہیں. اس لیے یہ پیپلز پارٹی نے ہمارے کئی لوگ شہید بھی کرائے ہیں گرفتار بھی کرائے ہیں. ہم ان جیلوں سے نہیں ڈرتے ہیں لیکن اپنے وطن کی دفاع کے لیے کوئی بھی سختی کریں گے ہم اس سے بڑھ کر آگے ان سے ٹکرائیں گے. بہت شکریہ سائیں زین العابدین شاہ صاحب. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ ہمارا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے. ان لوگوں سے ہمارا بالکل اس نے ڈسون کر دیا ہے کہ ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ہم میں سے وہ لوگ نہیں تھے. اور دوسرا وہ بڑے مطلب تھے کہ یہ آج جو جلسہ ہوا ہے اس میں اتنے لوگوں کی جو شرکت ہوئی ہے بہت سارے وہ مطلب ان کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تصور سے بھی بہت زیادہ لوگ آ گئے تھے. تو یہ ایک سندھ کے لوگوں کی ایک بات ہے کہ وہ ہمیشہ جو ان کا کوئی بھی کاز ہو جیسے کالا باغ ڈیم کے اوپر انہوں نے کمو شہید پہ دھرنا دیا تھا اور بھی اس طرح کے بہت سارے واقعے جب یہ رسپونڈ کرتے ہیں نیشنل ایشوز پر تو اس طرح کرتے ہیں. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں جی ایس محاذ کے چیئرمین جناب ریاض علی چانڈیو صاحب سے. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا تھا صورتحال پر تھوڑا جائزہ لیں. جی ریاض چانڈیو صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں اور آپ بتائیں کہ کس طرح آپ نے آج ساری صورتحال کو دیکھا اور آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی خالد صاحب یہ بات واضح ہے کہ آج سندھ کے لاکھوں شہری اپنی فیملیوں سمیت اپنے معصوم بچے لے کر اپنی بیٹیاں لے کر وہ لاکھوں کی تعداد میں آج بحریہ ٹاؤن کی گیٹ کے سامنے پرامن احتجاج کرنے آئے تھے. میں سندھ کے لوگوں کو خراج پیش کر رہا ہوں کہ کئی سالوں کے بعد اتنا بڑا عوام کا سمندر جو 20 کلومیٹر لکی سیمنٹ فیکٹری سے کراچی ٹول پلازا سے آگے رینجرز ہیڈ کوارٹر تک یہ لوگ کھڑے تھے حد نگاہ تک اور یہ آئے تھے کہ ہماری زمین پہ ہمیں عزت سے رہنے دیں. یہ میگا منصوبوں کے نام سے یہ جدید رہائشی منصوبے کوئی سندھ کے غریب لوگوں کے لیے نہیں ہیں. یہ لاکھوں ایکڑ زمین جو مقامی لوگوں سے چھین کر جن کے گاؤں اور قبرستان مسمار کر کے ہمارا فارسٹ جو ہمارے جنگلات ہیں ان کو کاٹ کر ہمارے جبل اور ندیاں پہاڑ ان کو توڑ کر وہ وائلڈ لائف کی ایریاز جہاں جانور کی پالنا ہوتی ہیں وہ علاقے وہ تباہ کر کے اور میں یہ عرض کروں کہ سندھ کے تاریخی وہ جگہیں ان کو آپ نے سارا توڑ کر ایک کنکریٹ کے بڑے عالیشان محل کھڑے کیے ہیں. یہ سندھ کے لوگوں کے لیے نہیں تھے. یہ ترقی ہمارے لیے نہیں ہے. یہ ترقی کے کوئی منصوبے نہیں ہیں کہ کراچی سے جامشورو تک آپ سارے علاقے کے بلڈرز کو دے دیں. ہماری زرعی زمینیں ان پہ قبضہ آپ کریں. دنیا کہہ رہی ہے کہ درخت لگاؤ. آپ سمندری درختوں سے لے کر مینگروز کے درختوں سے لے کر ساری سندھ کے اندر جنگلات کاٹ رہے ہیں. ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ میں 11 ارب درخت لگاؤں گا جسے دنیا ان کی
تعریف کر رہی ہے، مگر وہی وزیر اعظم اور وہی سندھ حکومت سندھ کے اندر درخت کاٹ رہے ہیں. ہماری ماحولیاتی ساری زندگی بہتر ماحول کے حوالے سے وہ تباہ کر رہے ہیں کہ سندھ کے لوگ عزت سے سکون سے بہتر آکسیجن بھی اپنی زمین پہ نہ لیں. یہ اس رد عمل میں آج لوگ آئے تھے اور ساری سندھ کی قوم پرست تحریک پرامن جدوجہد پہ یقین کرتی ہے. ہماری ساری عمر نان وائلنس موومنٹ میں گزری ہے. ہم کیوں چاہیں گے کہ کوئی بحریہ کی بلڈنگ کو آگ دے دے؟ پولیس نے لنک روڈ بند کر دیے، ہم تو چاہ رہے تھے کہ مین روڈ بھی بند نہ ہو. M9 کی وہ شاہراہ کراچی موٹر وے وہ بند نہ کیا جائے. ہم لنک روڈ پہ جا کے احتجاج کریں گے. پولیس نے کنٹینر لگا کر اسے سیل کر دیا اور ہم M9 پہ آ گئے. ہم بحریہ ٹاؤن سے باہر تھے، اندر شرپسندوں کو بلا کر جدید کیمیکل دے کر 20 فلور تک بلڈنگز کو آگ لگا دی گئی. یہ آگ کوئی پیٹرول سے تو نہیں لگائی گئی، اور جن نے آگ لگائی ان کو گرفتار نہیں کیا. ہماری سیاسی ورکر، عورتیں اور عام لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر تھانوں میں بھرا جا رہا ہے. اور دوسری طرف یہ کہ پولیس نے ایک بھی شرپسند گرفتار نہیں کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کس نے اجازت دی تھی؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ عدالتی تحقیقات کرائیں. CCTVs کے فوٹیج آپ کے پاس ہیں. ہمارے تو کوئی لوگ نہیں گئے تھے، ان کو تو گرفتار نہیں کیا گیا، مگر ہمارے دھرنے پہ پرامن احتجاج پر گولیاں برسائی گئیں، آنسو گیس کے شیل لگائے گئے تاکہ یہ دھرنا ختم ہو، سندھ کے لوگوں کو خوف زدہ کیا جائے. ایک طرف وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ یہ پرامن احتجاج ہے. ہم تو پرامن احتجاج کرنے گئے تھے. جو لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے جاتے ہیں وہ تشدد تو نہیں کرتے. ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں. ہم چاہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا 2018 کو کہ بحریہ ٹاؤن اللیگل ہے. سندھ کے اندر ماحولیاتی تباہی کے منصوبے غیر قانونی ہیں. ہم تو اپنی ماحولیات، ہم تو اپنی حق حاکمیت کو بچانے گئے تھے، ہم اپنی ماحولیات کو بچانے گئے تھے. اس وجہ سے آج جو سرکار نے غیر جمہوری اور دہشت گردی کے انداز میں ہمارے سیاسی ورکروں کو، ہمارے جلسے کو ختم کیا ہے وہ قابل مذمت ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر کارکن آزاد کریں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 9 جون کو اس گرفتاریوں اور تشدد والی کارروائیوں کے خلاف پرامن احتجاج ہوگا. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سندھ اسمبلی کا گھیراؤ ہوگا. جب سندھ اسمبلی بجٹ سیشن کرے گی تو اس کا گھیراؤ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سندھ اسمبلی سندھ کے تحفظ کے لیے قانون سازی نہیں کرے گی. بہت شکریہ ریاض علی جانڈ صاحب آپ کا. ناظرین اॼोको जेको धरणो हुयो बहरिया टाउन जे साम्हूं उन में बिला शक बिना कंहिं तफ़रीक़ जे उन में सिविल सोसाइटी जा माण्हू आया, बिना कंहिं पार्टी लाॻापे जे मुख़्तलिफ़ माण्हू उन में सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी, वकील, NGOs जा सेक्टर जा सोशल सेक्टर जा माण्हू तमामु वॾे अंग में शरीक थिया. छाकाणि त हिकिड़ो वॾो इशू आहे सिंधी माण्हुनि जे लाइ बहरिया टाउन जे ज़मीनुनि ते कब्ज़े जो ऐं माण्हुनि सिंधी माण्हुनि खे जंहिं तरीक़े सां बेदख़ल कयो थो वञे. इहो हिकिड़ो तमामु वॾो मामिलो आहे जंहिं ते सभिनी सिंधी माण्हू हिन ते रिस्पॉन्ड कयो आहे. असां सां मौजूदु आहे टेलीफोन ते जनाब जामी चांडियो साहिबु. जी जामी चांडियो साहिबु, तव्हां अॼु हिन सॼी सूरत हाल खे कीअं ॾिठो? अॼु जेको ही एहतजाज हुयो सिंध एक्शन कमेटी जे सॾ ते, ऐं उन में न रुॻो सभिनी सियासी पार्टी जा कारकुन हुआ पर सॼी सिंध मां वॾे पैमाने ते आम माण्हू ऐं सहाफ़ी, वकील, शागिर्द, नौजवान ऐं कलमकार हर क़िस्म जा शोबे जा माण्हू हुन आया ऐं तमामु हिकिड़े वॾे अरसे खां पोइ हिकिड़ो एॾो वॾो शो थियो एहतजाज जो. ऐं माण्हुनि जी मोटिवेशन तमामु हाई हुई, जज़्बो तमामु घणो. ऐं त उते सरज़मीन ते बहरिया टाउन जे गेट वटि हिकिड़ो तमामु असराइते क़िस्म जो सियासी मज़ाहिमती एहतजाज थियो ऐं जंहिंमें सभई माण्हू शरीक हुआ. त मुंहिंजे ख़्याल में इन सां यकीनन जेको सिंध जे माण्हुनि खे जॾहिं खां वठी इन्हनि बहरिया टाउन वारनि कब्ज़ागिरी शुरू कई ऐं वरी ख़ासि ताज़ो इन्हनि ॻोठनि ते हमला कया, जेको सिंध जे माण्हुनि जो रद अमल साम्हूं आयो उन सूरत हाल में, अॼु उन रद अमल जी वधीक हिकिड़ी मुनज़िम ऐं हिकिड़ी असराइती शिकिल हुई जंहिंमें सॼी सिंध जा माण्हू ऐं सियासी पार्टियुनि जा माण्हू, मुख़्तलिफ़ शोबनि जा माण्हू गॾु हुआ.
त मुंहिंजे ख़्याल में इहो हिकिड़ो स्ट्रॉन्ग मैसेज ज़रूरु वियो हुकूमत खे बि ऐं हिन लैंड माफिया खे बैरा टाउन खे बि त 21वीं सदी जे ज़माने में तव्हां ईअं ज़मीन ते कब्ज़ा कंदव ऐं ईअं तव्हां फ्रॉड करे ज़मीनूं ॾींदव बिल्डर माफिया खे ऐं वरी उहे बिल्डर माफियाऊं ईअं माण्हुनि खे हैरेस कंदियूं ऐं तारीख़ी माग मकान ड्राईंदियूं त ज़ाहिर आहे त इनखे को बि समाज बर्दाश्त नथो करे सघे ऐं सिंध जो माण्हू त पंहिंजी धरतीअ ऐं पंहिंजे वसीलनि जे बारे में वधीक हसास रहियो आहे। इन करे सिंध जूं हिकिड़े लिहाज़ खां अॼु तमामु हिकिड़ो सगारो गॾियल आवाज़ जीअं ताईं वियो त सिंध जो माण्हू हिन क़िस्म जी कब्ज़ागिरी खे फ्रॉड खे बर्दाश्त न कंदो। ऐं ॿी ॻाल्हि त इनखे जेको आम तरह चयो वञे थो त इहा को तरक़ी आहे त सवाल इहो कंहिंजी तरक़ी आहे। माना जंहिं तरक़ी में मक़ामी माण्हुनि खे तव्हां दरबदर कयो, मक़ामी ॻोठ मसमार कयो, उन्हनि खे हमला कयो ऐं तारीख़ी माग मकान जायूं ड्राए छॾियो ऐं ॻुज ॻुह में हुकूमत सां साज़बाज़ करे तव्हां उहे ठाह करे ज़मीनूं वठो सस्ते अघ ते त इहा तरक़ी न आहे। तरक़ी उनखे चइबो आहे जंहिंसां आम माण्हू जो फ़ाइदो थिए, जंहिंसां माहौल जो फ़ाइदो थिए ऐं जंहिंसां ज़ाहिर आहे त को बि पाण खे इनसिक्योर न सम्झे। हीअ त हिकिड़े माफ़ियाउनि जो धंधो आहे ऐं साॻे वक़्तु सिंध हुकूमत खे बि इहो तमामु मज़बूत नियापो वियो त जंहिं अंदाज़ सां हुननि इहा मलील डेवलपमेंट अथॉरिटी जे ज़रिए इहा ज़मीन फ्रॉड सां ॾिनी हुई बैरा टाउन खे, इहो ग़लति तरीक़ो हो ऐं पोइ ज़ाहिर आहे त हिकिड़ी तमामु महदूद प्रोजेक्ट खे हाणे 44,000 एकड़ ताईं खणी विया आहिनि त इहा तमामु वॾी हिकिड़ो स्कीम त न आहे, इहा त हिकिड़ो नओं शहर हिन जे बराबरि आहे। त मुंहिंजे ख़्याल में इन समूरे हवाले सां त असांजो ख़्यालु इहो बि आहे ऐं सभिनी माण्हुनि जो ख़्यालु इहो त हीअ न अर्बनाइज़ेशन आहे ऐं न हीअ तरक़ी आहे। जंहिं बि शइ में मक़ामी माण्हुनि जो ऐं ग़रीब माण्हुनि जो ऐं माहौल जो तहफ़ुज़ नथो थिए उहा तरक़ी न चइबी आहे। इन करे अॼु हिकिड़े लिहाज़ खां सॼी सिंध जो गॾियल आवाज़ वॾे पैमाने ते ऐं सभिनी क्वार्टर्स सां वियो। तमामु महिरबानी तव्हांजी जामी चांडू साहिबु। जी नाज़रीन, जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त हिन अॼोके धरणे में न सिर्फ़ु सियासी माण्हू शामिल आहे, सियासी पार्टियुनि जा, पर सियासी पार्टियुनि जा बि उहे माण्हू जिन जो हिन सां तालुक़ु न बि हुयो पर उहे माण्हू ज़रूरु शरीक थिया। उन में सिंध जा दानिश्वर, तव्हांखे जीअं ॿुधायो त अदीब, सहाफ़ी, वकील, सिंध जी हर सोसाइटी जो जेको सिंध जो दर्द रखे थो उहो हर माण्हू शरीक थियो। इन मौक़े ते असां ॻाल्हाईंदासीं। अॼु उन प्रोग्राम में मौजूदु असांजो तमामु सीनियर सहाफ़ी जनाब लाला रहमान समो साहिबु। जी लाला साहिबु, तव्हां ॿुधायो त अॼु हिन सॼी सूरत हाल खे तव्हां कीअं ॾिठो, छा थियो, इन ते तव्हां छा चवणु चाहींदो? अॼोको जेको धरणो हुयो सिंध एक्शन कमेटी जे सॾ ते बैरा टाउन जी गैर कानूनी वालार जे ख़िलाफ़, उन में तमामु वॾी शिरकत थी। सॼी सिंध मां माण्हू आया ऐं मुंहिंजो अंदाज़ो इहो आहे त लॻभॻि 1 लख माण्हू हिन धरणे में शरीक थिया हुया, जंहिंमें वॾो तइदाद त माण्हुनि जो रज़ाकाराना बुनियादनि ते आयल हुयो। हालांकि हिन में जेके बि सिंध एक्शन कमेटी जूं मेंबर या शामिल जमायतूं आहिनि उन्हनि बि तमामु वॾी तयारी कई हुई ऐं उन्हनि जा बि तमामु वॾा काफ़िला हुया जेके शरीक थिया हुया हिन धरणे में। पर कराची खां वेंदे हैदराबाद, सखर, लाड़काणो, मीरपुर ख़ासि, इन्हनि समूरनि डिविजन्स मां माण्हू पंहिंजे क़ौमी जज़्बे तहत शरीक थिया ऐं इंतिहाई हिकिड़ो शानदार ऐं पुरअमन धरणो हुयो। ऐं उते औरतुनि जे लाइ ख़ासि तौर ते जीअं असांजी रवायत आहे त स्टेज जे साम्हूं हुन जे लाइ पंहिंजो ग़िल्म विछाया विया ऐं गालीचा विछाया विया, हुननि खे विहारियो वियो ऐं मर्द जेके बि हुया झंडनि सां ऐं पंजनि सां बिल्कुलु ॿई पासा स्टेज जे साम्हूं बि आख़िरी नज़र पवण ताईं माण्हू हुया ऐं वरी स्टेज जे पोएं पासे बि ॿई रोड जेके आहिनि उहे छाकाणि माण्हुनि खे जॻहि न हुई बीहण जी, एतिरो वॾो क्राउड मौजूदु हुयो। पुरअमन नमूने हले पियो ऐं अञा अॻवाननि तक़रीरुनि जो सिलसिलो शुरू न थियो हुयो ऐं अञा गीत क़ौमी गीत नगमा उहे पिया। इन दरमियान कुझु माण्हू हुया जिन जे हथनि में लोही राडूं हुयूं ऐं उन्हनि जो तइदाद को वॾो न हुयो, 15-20 माण्हू हुया, पर उन्हनि आहिस्ता आहिस्ता अञा धरणो जो आगाज़ थी चुको हुयो त धरणे वारी जेका स्टेज आहे उन जे खाॿे पासे ते बैरिया जे मेन गेट जे प्रिय रोड ते उते SW वारनि जो जेके आहिनि से नाका लॻल आहिनि, जितां हू टैक्स वसूल कंदा आहिनि बैरिया नाके ते।
पहिरियां टाउन में जेको सामान अचे थो इन खां पहिरीं उन्हनि खे बाहियूं वञी ॾिनियूं ऐं टायर आहियो उन जे दौरान बि जेका क़यादत हुई उन केतिरा ई माण्हू मोकिलिया हिननि खे रोकियो हिननि ऐलान बि कया त जेके बि हिन क़िस्म जी कार्रवाई कनि था उन्हनि सां असांजो तालुक न आहे ऐं फर्दनि माण्हू मोकिलिया विया त तव्हां हिन क़िस्म जी का कार्रवाई न कयो हीउ पुरअमन धरणो आहे ऐं हिनखे तव्हां न कयो पर हुननि कंहिंजी कान ॿुधी उते हुननि खे बाहियूं ॾियण खां पोइ हुननि जो आऊं कोन ठहियो ऐं पोइ हलिया विया पहिरियां टाउन जो जेको मेन गेट आहे हुते गिरल लॻल आहे उनखे तोड़ियूं उहा तोड़े उन खां पोइ अंदरि गिरिया हुते पहिरियां वारनि जी ऑफिस हुई प्लाज़ा हुयो उनखे हुन बाहियूं ॾिनियूं इन दौरान बि जेका सिंध एक्शन कमेटी जी क़यादत आहे उन्हनि पंहिंजा माण्हू बि मोकिलिया ऐं बार बार अनाउंसमेंट बि कयूं त बाबा हिन क़िस्म जी का बि कार्रवाई न करे हिन क़िस्म जी जेके बि कार्रवाई कनि था उन सां असांजो तालुक न आहे ऐं उन्हनि माण्हू बि मोकिलिया उन्हनि ॾे जिन वञी उनखे सम्झाइण जी कोशिशि कई त तव्हां असांजो मक़सदु हीअ न आहे तव्हां असांखे नुक़सानु रसाए रहिया आहियो पर उनजे बावजूद बि उन्हनि जी ॻाल्हि खे बिल्कुलु अणॿुधो करे छॾियो ऐं उहे पंहिंजियूं कार्रवायूं कंदा रहिया ऐं पोइ आख़िर में उन्हनि मेन गेट खे बाहि ॾिनी ऐं उहो मेन गेट छाकाणि त फाइबर जो ठहियलु आहे इन जे करे हुन में तमामु शदीद बाहि बि लॻी ऐं फाइबर जे करे धूं वॾो ज़हरीलो थी वियो जो माण्हुनि में बाहि पइजी वई ऐं इन मौक़े ते इंतिज़ामिया पुलिस ऐं रेंजर्स मौजूदु हुई पर इंतिज़ामिया कंहिं बि क़िस्म जी का बि मदाख़लत न कई ऐं नतीजे तौर ते इहो थियो त जेको पुरअमन धरणो हुयो उहो माण्हुनि में बाहि पइजी वई ऐं उहो पुरतशदुद थी वियो मुंहिंजो अंदाज़ो इहो आहे त जेका मख़सूस माण्हू आहिनि पाणे अंदरि पार्टियुनि में मौजूदु आहिनि छाकाणि पार्टियुनि में बि पेनिटेशन त मौजूदु आहे न ऐं या जेकॾहिं पार्टियुनि जा न आहिनि त ॿाहिरि आहिनि पर इहे हिकिड़ा उथंदे ई इहो महसूसु थियो त हिननि जी नियत ठीकु न आहे उहो कंहिं गड़बड़ वॾी करण जो शौक़ु रखनि था ऐं उहो हुननि धरणो शुरू थियण जे दौरान ई शुरू कयो अञा अॻुवान तकीरूं शुरू न कयूं हुयूं त हुननि इहे बाहियूं ॾियणु शुरू कयूं पहिरीं FW जी नाकनि खे उन खां पोइ बैरिया में घिरी आहे जॾहिं बैरिया में घिरी आहे त पोइ तमामु सूरत हाल ख़राबु थी वई ऐं पोइ भाॼ वग़ैरह पइजी वई हली बाक़ी पंहिंजी नोयत में धरणो ऐं सम्झां थो त जेके बि वेझी तारीख़ में लॻा आहिनि धरणा उन्हनि धरणनि में सभिनी खां वॾो धरणो हुयो ऐं जेकॾहिं कमु शहीद वारे धरणे खां वॾो न हुयो त कमु शहीद जे धरणे जे बराबरि धरणो हुयो ऐं तमामु मुनज़म अंदाज़ में हुयो सिंध जे माण्हुनि तमामु वॾे चाह सां शिरकत कई छाकाणि हुननि खे शदीद कावड़ हुई त जेका जीअं ॻोठनि खे डाठो पियो वञे जीअं ॻोठाणनि खे तशदुद जो निशानो बणायो पियो वञे ऐं जंहिं गैर क़ानूनी तरीक़े सां उन्हनि खे उथारियो पियो वञे त उहा हिकिड़ी सॼी सिंध में कावड़ ई जंहिं कावड़ जो इज़हार करणु माण्हू पाण रज़ाकाराननि बुनियादनि ते बि बैरिया टाउन जे आॾो पहुता हुआ। जी लाला साहब तमाम बड़ी मेहरबानी। देखिए आज इन लोगों ने जो बात की है हमने इन लोगों से इन पॉलिटिकल लोगों से और सिविल सोसाइटी के लोगों से सबका तकरीबन एक ही मौक़िफ़ है कि ये जो लोग आए थे जिन्होंने तशद्दुद और जलाओ घेराव किया वो उसको डिसोन कर रहे हैं कि वो हम में से नहीं थे। वो जो पुरअमन लोग हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं, जो बाहर थे और जो अंदर हैं वो आए आराम से कार्रवाई करके चले गए और उनको कुछ नहीं हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग कहाँ से आते हैं और इस तरह के वाक़यात कैसे करते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब हुई थी तो उस वक्त जिस तरह ऐसी कार्रवाइयाँ हुई थी इसी तरह का केमिकल इस्तेमाल हुआ था, गाड़ियाँ और लोगों की इमलाक जलाई गई थी और आज तक उन लोगों का पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ थे, कौन थे और किसने किया। अगर वो उस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो जाती और हमारे हुकूमत और हमारे इदारे इसकी इन्वेस्टिगेशन करते कि वो कौन लोग थे, उनकी शनाख्त हो जाती, उनको सज़ा मिलती, तो शायद आज इस तरह के वाक़यात पैदा नहीं होते। अगर अभी टाइम है, अभी वक्त है कि हमारे इदारे इसको खोज लगाएं कि वो लोग कौन थे। और मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने भी ये बात की है कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, उनको हाई कोर्ट के जज साहबान पे मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी बनाए और जो उस तरह के बयानात ले और उसकी इन्वेस्टिगेशन करे कि ये कौन लोग थे, आया इनके लोग थे या नहीं थे। ये लोग इनको डिसोन कर रहे हैं कि वो हमारे नहीं थे, अगर नहीं थे तो वो लोग कौन थे और अगर इस तरह के लोग हैं तो उनको उसकी निशानदेही होनी चाहिए। तो आज के इसी के साथ हम प्रोग्राम अपना ख़त्म कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम में आपके साथ इंशाल्लाह आपका मेज़बान खालिद खोखर हाज़िर होगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।